demonstration of martial arts by the young kids. We shall have a presentation of horse by Telangana Horse Riding Academy, and they think about their health. I request every one of you to please welcome Dr. Sai Baba Gaur sir, the Padma Shri awardee Dr. Sai Baba Gaur sir. Sir, welcome sir. Sir is a philanthropist. He has been awarded the Padma. Apart from that, doctors who are there, Dr. Prashant, Dr. Padma Shri, the fact is today is a day where people understand, most of us are deprived. God has given us the perfect ability. For those who are syndrome, they have some disability, we've got to respect that. For that, we have this Autism Day awareness. That's very nice of you. The one thing what I want to tell you is a big thank you to all these wonderful generous and philanthropist people, because it's a fact, early morning they have wake up and they have come for the day. It's a true philanthropist thought. Thank you so much. Indeed, I just want to request each and everyone, please understand the day today why we are creating this awareness is those who are deprived of living a perfect life. We've got to love them. We've got to give them best of the best thing. Trust me, I love so much this day. That is the reason all the way from different places I have come here. My intention is quite clear. Those who are normal, we've got to respect those who have this syndrome. I want each and everyone to understand the importance of this day and make this day a great awareness day. Thank you so much. Special thank you to Dr. Shafi. Special thank you to Dr. Prashant sir, Dr. and respected Mamidi Narsimha Rao sir, and all the wonderful guests. In fact, all these respected people who are here, I want to say a big thank you. Thank you so much. Let's make this awareness day is a great day in the history. Thank you so much. हेलो नमस्ते मैं प्रिफर करूंगा कि हिंदी में ही बात करूं मैं डॉक्टर प्रशांत आरुटागे टुडे आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है ऑटिज्म मतलब सिंपल थिंग है सर कि लास्ट 2 इयर्स से बच्चे घर में कैद है बिकॉज कोरोना की वजह से देर आर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की सोशलाइजेशन कम होना चाहिए लेस गैदरिंग उसकी वजह से बच्चों में डिजिटल स्क्रीन का टाइम काफ़ी बड़ा है पहले हमारा एनवायरनमेंट इंडिया का ऐसे नहीं था जैसे हम कंबाइंड फैमिली प्रीफर करते थे घर में काफ़ी लोग होते थे बच्चे होते थे तो टीवी और मोबाइल का ज़रूरत बहुत कम होता था बट लास्ट 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है तो बच्चों में ऑटिज्म जैसे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी लर्निंग डिसेबिलिटी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं एंड ऑटिज्म मतलब सिंपल चीज है कि बच्चा फिजिकली एंड मेंटली नॉर्मल होता है बट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस मतलब आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता है कुछ चाहिए तो लेके जाके बताएगा बाय बॉडी लैंग्वेज या आपको खींच के लेके बताएगा बट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि मुझे ये चाहिए सो ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस ओरली सो स्पीच डिले होता है एंड हाइपर एक्टिविटी मतलब 1 सेकंड भी एक जगह पे नहीं बैठ सकता अगर आप मोबाइल देते हो तो ही एक जगह पे वो टिक पाता है या बैठ पाता है सेकंड थिंग लर्निंग डिसेबिलिटी ये बच्चों में कॉमन है तीसरा चीज कुछ चीजें जैसे कार एक साइड से लाइन में रखना या टॉयज एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखना या पर्टिकुलर एक चीज के बारे में पॉजिटिव रहना तो ये सिम्टम्स है ऑटिज्म के अगर ऐसी चीजें हम बहुत जल्दी पिकअप कर पाते हैं जैसे 18 मंथ्स ऑफ द एज इज द अर्ली पीरियड जहाँ पे हम लोग अगर डिटेक्ट करते हैं उसको डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ थेरेपीज देते हैं जैसे स्पीच थेरेपी हो गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी तो ये बच्चे ऑटिज्म से निकल के अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो नॉर्मल सोसाइटी में नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जा सकते हैं और इसका चांस है कि पहले 2 साल मतलब पहले 1 to 5 इयर्स तक ब्रेन अपना रिसेप्टिव होता है तो ये ड्यूरेशन में काफी अच्छे चेंजेस आके जो एक बच्चा स्पेशल स्कूल में जाने वाला है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या स्पेशली एबल्ड किड बनना है बिकॉज ऑफ आपके अवेयरनेस की वजह से एक बच्चा स्पेशल स्कूल में जाने के बजाय नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है so on this occasion we are not celebrating but we are making awareness that detect autism early treat it early early intervention and make them lead normal life give the equality and no discrimination in the society. Thank you. Today we are
not celebrating autism, but we want to create awareness among the parents and also the society. Autism means the child is not able to communicate with others properly, so that the people will think that he has got some mental problem, he has got a communication problem, and they try to ignore them, especially the parents. So what awareness program is to identify the children who have got this communication problem and give proper training and see that they are in the mainstream of the society for education. And some children may need some psychological treatment also. We have a child psychologist services available in the schools also. We can take their help and see that the children are not looked down, provided the parents and society treat them as a normal children and give them opportunities for education and also movement into the society. I thank Prashant having taken this program in a large scale to create awareness in the society about the autism. Many parents are thinking that we are cursed by God by having a child with autism. But don't get discouraged. Let us all together support these children and families so that the children will live into the normal society like a normal child and give all the encouragement. Let us give all the encouragement for them to have a normal life. I thank once again for Prashant giving me the opportunity to participate in a major event in Twin Cities to create awareness. But of course, it is not one program, but we must have continuous program to change the attitude of the society toward these children with autism. I thank again the people who have participated in this main event. I'll request Dr. Pawan Kumar, who is Indian Academy of Pediatrics Telangana State Secretary, to talk on autism. Thank you so much, Dr. Prashant. Today is really a wonderful event and historical moment for Pediatric Academy of Telangana State to be associated with Uttajay Foundation and Vijay Foundation. Thank you so much, Prashant Uttajay, for giving us an opportunity to be associated with this great movement. So I can call it as a movement because human beings, we are special in the animal kingdom based on our brain potential only. And the communication is one of the key aspects where we can communicate with each other and learn more. And this language has given us a great power in the entire animal kingdom. We are not very strong like elephants. We are not very strong. If you see the animal kingdom, the lions are mightier than us and the elephants are very stronger than us. But we are no way comparable to these other things. And if you see the height, we are not the tallest people. The giraffe is much tallest. So like if you see the weight is the comparison that elephants are the biggest ones, right? So but still we rule the entire planet just because of our brain potential and the communication what we do with each other, and that's how collaboration happens. But these autistic children, they are unable to process that communication process. And please remember, 1 in every 66 children, they are now autistic. Now this is going to be, autism is the new pandemic which we are going to face, which we are already seeing in our clinics. It's like alarmingly rising. So this awareness is very, very important because most of the parents, they go into depression. I've seen people going to depression the moment they hear this. So please remember, this is a disorder, it's not a disease. Everybody, if you given a correct environment, the conducive environment, we can make them shine and it's like a rising superstars. So thank you so much on behalf of entire Pediatric Academy of Telangana State. We thank Prashant and Prasad. Thank you, sir, for giving us this opportunity. Sir, the word. On World Autism Day, they are conducting about awareness on autism. ठीक है
ఈ పిల్లలు రెగ్యులర్గా మొబైల్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ సమ్ సిమ్టమ్స్ వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో ల్యాగ్గా ఉంటున్నారు. అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్ అనేది లెస్గా నార్మల్ చిల్డ్రన్తో పోల్చుకుంటే వాళ్ళలో తక్కువ ఉంటుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ని మనం డిసార్డర్ లెక్క చూడకుండా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి సొసైటీ నుంచి ఎటువంటి నీడ్ కానీ హెల్ప్ కానీ కావాల్సిందో దాన్ని అందజేస్తూ వాళ్ళని ప్రోత్సహించి ఆ సిస్టమ్ ఆ యొక్క ఏమంటారు ఫోబియా నుంచి బయటపడేసి ఫర్దర్గా అటువంటి ఫేస్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూ ముందుకెళ్తూ ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినందుకు వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. थैंक यू प्रशांत भाई और अन्य आयोजक जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है. आज यहाँ पे चार मीनार के पास में और खास करके जो ये सब्जेक्ट है ऑटिज्म का, बेसिकली जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरह का. तो जो साइकोलॉजिकल डिसीजेस होती हैं उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे समाज में इस डिसीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि पहले वक्ताओं ने बोला कि जो इस डिसीज के पेशेंट्स हैं उनको हम साइडलाइन कर देते हैं बहुत बार, या छोटी छोटी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एक आगे जाके इस बच्चे के ग्रोथ में बहुत बड़ी हिंड्रेंस बनेगी. तो जो ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाया है प्रशांत भाई ने, डॉक्टर प्रशांत भाई ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और किसी भी साइकोलॉजिकल डिसीज के लिए ये अवेयरनेस देन केयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और खास करके जो बच्चों के बीच में है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको शुरुआत में जो स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो बहुत सारे अदर खेल कूद के जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनकी इस डिसऑर्डर की वजह से जनरली स्कूलों में या खेल कूद की एकेडमीज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पेंटिंग्स की एकेडमी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो इस डिसीज को जितनी जल्दी हो सके, इस डिसऑर्डर को जितनी जल्दी हो सके क्योर कर देना चाहिए, ताकि वो बच्चा एक समाज में नॉर्मल बच्चे की तरह रह सके. और मैं इस कैंपेन के लिए और डॉक्टर साहब को, जो भी ये डॉक्टर साहब ने मुझे पहले बताया था कि इनका बहुत बड़ा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये डॉक्टर साहब केवल हैदराबाद शहर में नहीं बल्कि जो तेलंगाना है और महाराष्ट्र है, इनके रूरल एरियाज में भी जो है बहुत काम कर रहे हैं. और नांदेड़, लातूर और आदिलाबाद, निजामाबाद जैसे रूरल एरियाज में भी प्रशांत भाई बहुत काम कर रहे हैं. तो इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इनका उत्साहवर्धन करना चाहता हूं. और मैं सभी लोगों ये गुजारिश करता हूं कि इनका जितना जो हो सके उतना उत्साहवर्धन किया जाए, ताकि समाज में इस डिसीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ सके और जल्दी से जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम स्टेज में हो सके, इस डिसीज का निवारण किया जा सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रशांत भाई. छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा इसमें. लातूर में ऑटिज्म सेंटर, उमंग ऑटिज्म सेंटर के नाम से एक स्कूल चालू की गई है, जिसमें ऑटिज्म के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, थेरेपी दी जाती है. वो अपने इंडिया में इट इज फर्स्ट स्कूल ऑफ इट्स ओन काइंड, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया है और उसको नेशनल लेवल पे अवार्ड देने का एक काम किया है. और सेम वैसे स्कूल ऑफ ऑटिज्म मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में अपडेट हो रहे हैं. थैंक यू प्रशांत. So I just want to say a big thank you to Dr. Prashant. I want Dr. Patil, I request Dr. Patil to speak a few words.
Namaste. I just want to thanks Dr. Prashant sir for this wonderful program. Just want to share my own experience because my son is now some 15 months and he suffered from this delayed milestone disease, which is a part of this autism, around 8 months. Initially we don't know about this. He is suffering from that delayed milestone dilemma. But later on, once we consulted doctor, they have said that he is having delayed milestone. But we are very worried. Then when I come to Hyderabad and I have just started consultation with Dr. Prashant, his therapy has made my child from delayed milestone to now a normal child. So this is the beauty of this center run by the Prashant sir. So I just want to share that the early intervention is the key in all this area. So whenever any parents found that their child is not doing activities which is supposed to be done at that period, so just like 6 months he should start sitting up. So I think we should consult the doctor. I also again thanks Dr. Prashant for this wonderful event, and he is doing so much philanthropic activities. We also just make all the best for him. Thank you. Now I request Dr. Chitranjan sir to have a few words, and he is Joint Commissioner Income Tax. Please sir. Good morning everyone. I really appreciate the efforts put by all the doctors, pediatrician, Telangana Academy of Pediatrician and Dr. Prashant Utge sir to propagate the awareness about the autism so that society will understand what the autism means. The children with autism will not be left behind from the society. Usually they are labeled as mentally retarded children and they are not given importance. But the thing is far different. They don't have mental retardation. Their brain is fully functional. But only thing, they are not able to communicate. And here the intervention is needed. So early intervention if we do, and if we make them communicate with the world, then they can do wonders. And I just want to bring your attention to this line over here. It's okay to be different. It's okay to be different. That means these kids, they have another set of expertise. They have their own intelligence. Only thing about expression. And if we take care of this expression, then these kids will definitely do wonders and they will contribute to the society, they will contribute to the humanity. And this is what exactly the work done by Dr. Prashant Utge sir and their center. And this is where our focus is, and I congratulate and thank you once again to Dr. Prashant sir and Telangana Academy of Pediatrician, and I congratulate them and thank you them. Thank you so much. I am sure he put in some wonderful insights. Can you hear it from please? హాయ్ నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. నాకు కూడా మిగిలిన డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై కిడ్, మై సెకండ్ కిడ్. వెన్ మై సెకండ్ కిడ్ ఈస్ నాట్ సేమ్ లైక్ నా ఫస్ట్ కిడ్ లాగా సెకండ్ కిడ్ సేమ్ టైంకి చేయాల్సినవి చేయకపోవడం వల్ల నేను చాలా టెన్షన్ పడినాను. నౌ ఆల్సో ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ థింగ్. వీటన్నిటికీ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మనం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయలేకపోవడం, వాళ్ళని గమనించకపోవడం. వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారు కదా అని మొబైల్ ఇవ్వడం, టీవీ పెట్టి వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళని వదిలేస్తే వాళ్ళు అదే లోకంలో ఉంటారు. బికాజ్ పిల్లలు మనల్ని అనుకరిస్తారు కానీ వాళ్ళని మనం ఏది చేస్తే వాళ్ళకి చేస్తారు. మీరు 24 గంటల్లో 10 గంటలు 15 గంటలు మీరు మొబైల్లో ఉంటే వాళ్ళు మొబైల్లోనే ఉంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నా కొడుకున్నాడు, మై సన్ ఈజ్ 5 year old సార్, 3 year old, 3 year 10 months. If I see more mobile, if I am with my mobile, na mobile to ninte, he also asked me to give the mobile. And sometimes when I am taking him to walking or something, he asked me to turn off the mobile. So నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే బీ విత్ దెమ్ మోర్, అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ సమయం గడపాడు.
బికాస్ ఇప్పుడు కాకపోతే మీరు తర్వాత దాని గురించి బాధపడాల్సిన సమయం వచ్చేలాగా మీరు చేసుకోకండి. పిల్లలతోటి స్పెండ్స్ మోర్ టైమ్ విత్ చిల్డ్రన్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఎంగేజ్ ఇన్ సమ్ యాక్టివిటీస్. సో పిల్లల్ని ఆడుకోనివ్వండి, ఎక్కువగా ఆటల్లో పాల్గొనండి, లైక్ స్విమ్మింగ్ కానివ్వండి, రన్నింగ్ కానివ్వండి, వాకింగ్ కానివ్వండి, వాటిల్లో ఎక్కువ ఎంగేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ మొబైల్ ఇవ్వకండి, టీవీ ఎక్కువ పెట్టకండి. తప్పదు, రోజులో కొన్నిసార్లు తప్పదు, కానీ దానికి మ్యాక్సిమం దూరంగా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. And they are special kids, as the doctor said, they are special kids. And I would request from this stage to the government that please focus something from government, because right now government has doing many things to physically disabled persons, but literally in India these mentally abled or mentally different children are being ignored. Please correct me if I am wrong, because it need more information or more activism from the parents. ఇక్కడ డాక్టర్స్ కన్నా లేదంటే గవర్నమెంట్ కన్నా కూడా తల్లిదండ్రుల నుంచే ఎక్కువ పాత్ర ఉంటుంది ఇటువంటి పిల్లల్ని గుర్తించడంలోనూ దానికి సంబంధించి సరైన చర్యలు తీసుకోవడం. ప్లీజ్ మీ పిల్లల్ని మీరు గమనించండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఇవెలా ఉన్నాయి మీరు గమనించుకుంటేనే పిల్లల్ని మనం సరైన పద్ధతిలోకి తీసుకురాగలం. లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇటువంటిది ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కరెక్ట్ టైంలో మనం వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయగలం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డాక్టర్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు రిప్రజెంట్ హ్యాపీ హైదరాబాద్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ మోర్ యాక్టివ్ ఇన్ టు స్ప్రెడింగ్ ద స్పోర్ట్స్ ఇన్ టు their lives. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, एक बच्चे की जिंदगी में माँ बाप, उस्ताद और उस्ताद के बाद जो बच्चे की परेशानी को समझ सके और उसको दूर करने की हत्तल इम्कान कोशिश कर सके, वो डॉक्टर बड़ा ही अहमियत रखता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी हैप्पी कि न सिर्फ शहर हैदराबाद में ही पूरे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ डॉक्टर्स में अपना नाम रखने वाले रेनबो हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर लोकेश लिंगप्पा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप सबके सामने कुछ खास करें. नमस्ते, गुड मॉर्निंग. ऑटिज्म के बारे में पता नहीं कितने लोग जानते हैं. ऑलरेडी सुबह से बहुत सारे लोग बात किए. ऑटिज्म की मतलब फिजिकली नॉर्मल रहते हैं बच्चे, भागते हैं, नॉर्मल उम्र पे भाग दौड़ करते हैं, सारा कुछ फिजिकली फिट रहते हैं. उनका दिमाग का अगर स्कैनिंग करेंगे स्कैन नॉर्मल निकलेगा, लेकिन वो माँ बाप को भी पहचानेंगे नहीं. उनका आँख ठीक रहता है, कान सुनता है, लेकिन वो माँ बाप को पहचानेंगे नहीं. वो 2 साल को हो, 3 साल को हो, देखते हैं, लेकिन वो मेरे मदर है, फादर है करके भी पहचानने के लिए नहीं होता है. बुलाने से, उनका नाम बुलाने से वो उनका नाम है, मेरे को देखना है, वो भी नहीं पता चलता है. उनका ब्रेन ऐसे काम करता है. सो ये ऑटिज्म बोलते हैं, जहाँ पे बात नहीं आता है बच्चों को, माँ बाप को पहचानते नहीं है, माँ बाप के वॉइस को नहीं सुनते हैं. ये ऐसे सिम्टम्स जब दिखता है बच्चों में, इसको ऑटिज्म होने का चांसेस रहता है. तो वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया तो उनको अर्ली स्टेजेस में थेरेपी दिया तो बेहतर चांसेस होता है उनको ठीक करने का. इसको चांसेस होने का चांसेस कम कर सकते हैं क्या? ऑलरेडी बात किए थे कि अर्ली स्टेजेस में बच्चों को गैजेट के सामने नहीं छोड़ना, माँ बाप और उसके रिलेटिव्स जो भी है उनको एक्टिवली एंगेज कीजिए. इमोशनल उनसे सामने बात करते हुए, हर बढ़ते हुए बच्चों को दिन में एटलीस्ट 5,000 to 10,000 वर्ड्स सुनना चाहिए उनको बात करते हुए. सो इतने अगर दोनों माँ बाप काम कर रहे, बिजी है, घर में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? बहुत कम हो जाता है न्यूक्लियर फैमिलीज में स्पेशली. सो जब कंबाइंड फैमिली रहता है, जॉइंट फैमिली रहता है, बात करते रहेंगे, वो बात वो बच्चे के ब्रेन के थ्रू जाता है, उनका नेटवर्क बन जाता है, तब ये ऑटिज्म होने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन. सो
जब भी छोटे बच्चे रहते हैं उनके सामने गैजेट्स कम करके उनको स्टिमुलेट करते रहेंगे तो होपफुली ऐसे होने का चांसेस कम होता है। बट जब डायग्नोज हो जाता है अर्ली इंटरवेंशन के साथ हम उनको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। कृष्ण गुप्ता साहब जो ये बता रहे थे कि बच्चे जितनी ज्यादा देर अपने वालिदैन के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ गुफ्तगू करेंगे, जब ये फोन छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटिज्म डेवलप करने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। मैं यहाँ पर स्टेज पे जो लोग तशरीफ फरमा हैं उनमें से चंद लोगों का तारुफ आप सबसे कराना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी में उस्ताद का बहुत बड़ा मर्तबा है। बच्चा कहीं जाए ना जाए वो स्कूल जरूर जाता है और स्कूल में उसका साबिका पड़ता है उसके उस्ताद से। तो उस्ताद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ये चीज को समझे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को, इस स्टूडेंट को थोड़ा सा इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर ये उस्ताद कर पाए तो हो सकता है जो उम्र भर की तकलीफ उस बच्चे को होगी उस तकलीफ से वो निजात पा सकेगा। तो हमारे पास ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन हैदराबाद के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे बोर्ड मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहैसियत टीचर उनका क्या वक्त नजर है वो आप सबके सामने रखें। जनाब मोहम्मद हुसैन सोहेल साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन। Thank you very much, sir. First of all, I would like to congratulate for this wonderful work done by the team, Dr. Steve and Mr. Shafi sir, all are present here. At the same time, ITA, Hyderabad district presenting this very important event. ये खुलतुब शाह के शहर चार मीनार के दामन में इस तरह का प्रोग्राम हमारी आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा नस्लों के लिए एक तारीखी मिसाल बनकर रहेगी। यकीनन ये जो काम यहाँ पर किया जा रहा है इसमें सैकड़ों का मजमुआ यहाँ पर होना चाहिए था। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो डॉक्टर्स की टीम, ऐसी बात है जो अभी तक हम भी नहीं जानते थे, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपने इसको प्रेजेंट किया है। स्कूल्स के जरिए से, स्कूल्स के टीचर्स के जरिए से, प्रिंसिपल्स के जरिए से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम तमाम स्कूल्स में इंशाल्लाह ताला चलाएंगे ताकि नन्हे मुन्ने जो मासूम बच्चे हैं जो आज के ज़माने मोबाइल फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी के जरिए से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह में बिजी है, इनको इन चीज़ों से हटाकर माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का प्यार, भाई बहनों से इनकी बातचीत, इनके फ्रेंड्स से इनका रवाबित वगैरह हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपकी तमाम टीम को जो इस बेहतरीन काम के लिए इस चार मीनार के दामन में यहाँ जमा हुए हैं, बस इस शेर का एक शेर आपकी नजर करना चाहूँगा। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन सोहेल साहब। आइए एक दो चार बातें हम जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिनका तजुर्बा रहा है उनसे भी सुन ले। सैयद आरिफ साहब, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन। Thank you, sir. A very warm good morning for everyone. It's a kind of very rare occasion that we generally attend, and especially the place where we are standing today. Here we need a lot of awareness kind of thing among the schools of this particular zone especially. When I studied last my research says, I think Dr. Saab will also agree with me, that 15% of the students who are sitting in the classrooms are suffering with this. So that 15% when they grow up, like they are nowhere. इधर माँ बाप उनको एक्सेप्ट करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं और उधर समाज उनको तैयार नहीं। तो ये बच्चों के साथ जो आगे दिक्कतें आती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। If we can really identify them, if we can really identify the milestones what they are achieving at the very young age, then the chances of giving a kind of behavioral therapy for them and bringing them out of that zone is very high. तो जरूरी है इस स्टेज के जरिए से मैं गवर्नमेंट से भी तलब करता हूँ कि इस किस्म का अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कुछ हद तक होता है लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तक ये नहीं पहुँचता है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो 55% स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं हमारे स्टेट के,
उन तक पहुंचाने के लिए इवन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स में भी इस किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं, ताकि टीचर्स उन बच्चों को प्री प्राइमरी लेवल में ही आइडेंटिफाई करे और उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाए कि दूसरा बच्चा ये कर पा रहा है, आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट immediately so that all the milestones can be achieved when he grows up. So even a kind of training program, if the organizations who are supporting this program today here are ready to do, we can even do one thing कि आज आईटा के करीब 200 स्कूल्स हैदराबाद में मौजूद हैं शफी सर, हम हर स्कूल से अगर एक इंचार्ज बनाए, एक ऐसे पर्सन को चुन लें कि वो ऑटिज्म क्या है या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ साथ इसको जोड़ दें या फिर डिसलेक्सिया के साथ जोड़ दें, तो अब मुमकिन है कि ये एक बंदा जाकर अपने स्कूल में दूसरे टीचरों को सिखा सकता है और हम फिर पेरेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं. देन वी कैन एस्टैब्लिश अ बिग चेन ओवर हियर. तो इफ द स्पॉन्सर्स हु आर प्रेजेंट हियर आर रेडी फॉर दैट, आईटा विल सपोर्ट कंप्लीटली and ITA will decide and select one person from each school who deserve to get trained on this and who can extend this to the parents, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. And with an audacious faith in the commitment towards making a better world of Vijayadevi Foundation, I'm sure sir will definitely think over this particular thing. Shiva sir, 2 line and then हम program की proceeding start करेंगे, please. Autism or else differently able person is, there is nothing that is not gifted from the God. Everything is in the world is gifted from the God. It is all how you think, how you believe. It is all about the perspective, how you take it. एक चींटी भी अल्लाह की जानिब से, खुदा की जानिब से, गॉड की जानिब से गिफ्टेड है. हमको सोचना चाहिए कि वो दुनिया में उसका क्या काम है. तो डिफरेंटली एबल, ऑटिज्म, ये सारी चीजें जो है हम सोचते हैं कि ये दुनिया में बनाए गए हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. भगवान खुदा दुनिया में ऐसे ही कोई चीज नहीं भेज देते. हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, उसके दुनिया में आने का कोई एक मकसद होता है. हमको चाहिए कि हम उसमें से क्या निकाल सकें. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन दैट, वी हैव टू टेक आउट. हर चीज अहमियत रखती है, हमको समझने की जरूरत है. तो मैं शफी साहब और ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ उनको कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम चारमीनार के दामन में ऑर्गेनाइज किए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. आइए अब तकारीर के सिलसिले को हम खत्म करते हैं. एक चीज जो आप सबने अभी जानी है तमाम डॉक्टर्स के साथ या सभी के साथ, वो ये है कि हमारे बच्चों को पोस्ट लॉकडाउन जो सेल फोन्स का अटैचमेंट हो गया था, यानी पढ़ाई भी फोन के जरिए हो रही थी, तो उसके चलते बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हुए हैं. तो विजयादेवी फाउंडेशन की जानिब से ये कोशिश की गई है कि हम बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, वो गिरे, वो संभले, गिर कर फिर संभले और उठे. ऐसा एक मोटिवेशन देने की कोशिश की गई है. इस वजह से मैं ये कहता हूं कि इस चारमीनार के दामन में ये प्रोग्राम को जो मुनक्किद किया गया है, यहाँ पर जो लोग दूर दूर तक खड़े हैं उन सबको एक मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे भी ये कर सकें. वी विल बी प्रेजेंटिंग a martial arts display very shortly with all the kids. दूसरी चीज, एक और एक्टिविटी जिसके बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स को, जो बच्चे की फिजिकल एबिलिटी को हेल्प करती है, बढ़ाती है, दैट इज हॉर्स राइडिंग. एंड वी आर थैंकफुल टू तेलंगाना हॉर्स राइडिंग अकेडमी. मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए बच्चों टू जनाब आजम साहब, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शौक है, ये शौक जो जाबाजों का और बहादुरों का जो शौक है घुड़सवारी का, वो हम नौजवानों तक, बच्चों तक पहुंचा सके. We are very thankful to him. He has come here and he has been a part of this particular program. Thank you so much. And मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग डॉक्टर्स हैं उनमें से भी बहुत अच्छे घुड़सवार,
इन लोगों ने भी सीखी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से आप ये बताइए। हाँ, टीचर्स भी है, टीचर्स में मैं पीछे हूँ, सामने हमारे बहुत सीनियर शहबाज साहब भी है जो बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं, तो वो लोग के प्लेयर है माशाल्लाह। ही प्लेज नेशनल लेवल गेम्स आल्सो माशाल्लाह। तो आइए पहले डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये हम सीखें कि व्हाट हैपेंस विद दिस। सर, ऑटिज्म, कॉग्निटिव स्किल्स, हॉर्स राइडिंग, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, 2 लाइन बस ज्यादा। हॉर्स राइडिंग मैंने आपके थ्रू ही ज्वाइन किया और आजम भाई ने हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। बट अभी जो ट्रेडिशनल थेरेपी चल रहे थे ऑटिज्म के लिए, नाउ देयर इज डिफरेंट थेरेपी विच वी आर यूजिंग कि एनिमल को यूज करके, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉर्स राइडिंग। अगर बच्चा हॉर्स राइडिंग करता है तो कॉग्निटिव स्किल, दूसरा बैलेंसिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एंड एट द सेम टाइम ऑडिट वी कैन से बैलेंसिंग स्किल्स, जिसमें कि कॉक्लियर टर्न्स होते हैं जो कि बच्चे के हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी, जो बच्चों में ऑटिज्म है और साथ में हाइपर एक्टिविटी है या अति चंचलता बोलते हैं, तो ये काफ़ी हद तक कम होती है। तो हॉर्स राइडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल स्टिमुलेशन और natural therapy to the child with ADHD, to the child with hyperactivity, and even normal बच्चों में एक्टिविटी नॉर्मल लेवल और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी डॉटर भी मेरे साथ हॉर्स राइडिंग के लिए आती है, आयुषी, एंड आई मेक श्योर कि आई विल गिव द राइट मैसेज बाय माय ओन एक्शंस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए जनाब आजम साहब के लिए, हु इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर। अत्तापुर के पास तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी है, और मैं अपने आप भी बता रहा हूँ, विद इन 1 मंथ, सिर्फ 1 महीने में आप बहुत अच्छे घुड़सवार बन जाओगे अगर आप पाबंदी के साथ, रेगुलरिटी के साथ उसको मेंटेन करें। थैंक्स टू हिज एंटायर टीम।
to Mr. Ansar. The way your kids had performed, it's बहुत ही माशाल्लाह. आप कैसा है इतने बच्चों को वो करें अंसार भाई? सर मैं बहुत साल से ट्रेनिंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे उस्ताद का जो है इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो है इंटरनेशनल पे भी खेल कर आए और ये जितने भी सारे बच्चे हैं पूरे गरीब बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कोई फीसेस नहीं है और बहुत ही अच्छा ट्रेन कर रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी लेके जाने वाला हूँ रमज़ान. You know the best part is what Mr. Ansar had told. It really touched my heart. The fact what he said is they're all underprivileged persons, but he's doing his efforts. If at all people who could not able to pay the fee also, he is doing such a great, service to the humanity. Give a round of appreciation to this great generous person. Thank you so much. In fact, he's got a dream to make these youngsters to, probably in future you can expect maximum gold medal for our respected India. Thank you so much. You're making our nation proud. We are so proud of you. Thank you so much. Thank you sir. Thank you very much for calling us. First of all, I would like to say a big thank you to this young, generous guy. The fact is, he organized such a great event. You can witness here. We are in Hyderabad, that we have a monumental near Charminar. The fact is, the efforts what he has done, I can see. Morning, at 4 o'clock when he called me and said that Mr. Fahim, there is an event here. I asked what it's all about. He said about autism. I was so glad and definitely, I love the guy's efforts. I just want to ask you, what's today all about, Mr. Shafi? In fact, we've got a lot of intellectuals. First of all, I wanted to ask Mr. Shafi, just tell something about this. Basically, the idea comes from the very fact that we and the entire team which is over here, we deal with students and we understand the problems which they face when they are unable to learn or they are unable to concentrate. Okay, attention deficit and other things, everything. There are so many problems which they face. So we as teachers, I personally believe we have a responsibility, which we can call it as our social responsibility towards students. So what we thought is we have been in contact with Vijaya Devi Foundation and Uttaj Child Development Center, wherein these people are experts in understanding the attention deficit problem which occurs in children. So we thought, I think the suggestion which came as with AITA training and guiding few of the teachers in identification of the initial preliminary screening for autism, I think that will be really very, very helpful. I thank each and everyone who has been here and making this event successful. Thank you so much. In fact, we've got a lot of intellectuals. I just want to ask from these intellectuals, just tell something about today's event, please. The thing is, since last couple of years, we all are undergoing a kind of pandemic situation, and alhamdulillah we are coming out of it recently, but the kids have suffered a lot. The milestones what they are supposed to achieve during their teenagers are not being fulfilled because of the pandemic situation, and even the schools were forced to go for the online kind of mode, and due to which the physical activity has been reduced drastically. This even results in a specific learning disabilities that's called as SLDs, kind of behavioral changes among the students. So through this platform, what we are thinking, let the students be identified if they have got any such kind of issue, and let the teachers get trained how to identify it, then at the same time how to bridge a kind of gap in between the people who provide the therapy for these kind of behavioral issues and to the parents who are suffering a lot. So hope this day will definitely help the parents as well as the students too. Sure, very nice. Thank you very much. Would you like to say something as well? We, the AITA team, the principal teachers, feel immense pleasure to be a part of this such a wonderful program. Really, it's a need of the days where we are suffering lack of studies last pandemic. And alhamdulillah, such type of wonderful program will encourage the students and parents and as well as teachers. Thank you very much for organizing such a wonderful program. Thank you. I would like to say a big thank you to all the generous guys. The fact is, early morning they have come here and they have done such a great, and definitely it will be a great support to the humanity. Thank you so much. Hello everyone. First of all, I would like to say a big thank you to these generous doctors. The fact is, they've come here and their intention is quite clear. They want to spread positivity. They want to tell you what the importance of this day. In fact, they're giving such a great awareness. And I just want to say Dr. Lokesh Lingampa, Dr. Pawan, Dr. Prashant. Would you like to say something about this day, please?
Hello everyone. Today is the World Autism Awareness Day. It is the 2nd April. Why we are celebrating? It's not the celebration, but it is making aware all the people that after lockdown the incidence of the autism has increased, and what are the signs we are looking at? Child is physically very good but unable to give the eye-to-eye contact. That is non-verbal communication, and unable to speak, but rest of the things he will be able to do all the things, and sometimes they may be little bit hyperactive, and sometimes they may be doing some repeated actions or repeating the sentences. So it is easily diagnosed early. So if you diagnose early, can be treated with medicine as well as therapies, and they can lead a normal life. So this is a preventable cause. As Dr. Pawan said in last speak, that 50% only diagnosed with genetic problem, but rest can be prevented. So try to make awareness and prevent and make them inclusive into the our normal society. Thank you. Thank you. Yeah, on behalf of Pediatric Academy of Telangana State, Dr. Pawan, myself, Secretary of the State, thanks Dr. Prashant Uttajay and Dr. Lokesh Lingappa sir for this fantastic movement. They have initiated a movement on this World Autism Day that is celebrated on April 2nd. As already discussed, after lockdown, two things have risen alarmingly. Silent emergency, they are like silent emergency. In the physical level of the child, it is obesity which is rising, and also mental level, the autism is rising like anything. If you identify two things, any child who is having speech delay, please alert and tell your pediatrician at the earliest. Don't delay it. Because if you see, on an average in other countries, the early detection is... Early detection is at 18 months in other countries, but in India it is 3 to 4 years. So it is just being delayed. If detected early, it can be managed very well, and they can be brought into the normalcy. So this is my message today. Any speech delay, any no eye contact, and a child not responding to name. So if these three things are there, contact immediately your pediatrician. That's the message. Thank you. Yeah. So मैं डॉक्टर लोकेश लिंगप्पा हूँ, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. ऑलरेडी जैसे बोले हैं, ऑटिज़म के लिए जो ट्रीटमेंट अर्ली शुरू करने से बेहतर होगा. दूसरी चीज़ है, ये प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? कोशिश तो कर सकते हैं. ये बच्चे जब जन्म होते हैं तब से उनसे बात करते रहना है, उनको डिजिटल टाइम कम करना है. 3 साल से पहले कोई गैजेट से एक्सपोजर नहीं होना है. उनके हाथ में मोबाइल मत देना, मोबाइल दे के छोड़ना नहीं. हमारा काम रहता है, लेकिन हम उनके साथ कंटिन्यूसली एंगेज रखने की वजह से उनका ये जो ऑटिज़म होने के चांसेस कम कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़, ये गवर्नमेंटल सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि ये थेरेपीज़ का कॉस्ट बहुत रहता है फैमिलीज़ के लिए. वी नीड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Because you can see all these things happening for this young generous guy. I want him to say something, Mr. Shafi. How was the event? How you feel? What is today's event thing? It was a wonderful event with everyone doing their best. Thank you so much. Thank you, Happy Hyderabad. Thank you, PHRA. Thank you, everyone, for making it a grand success. Thank you so much. Your presence actually matters a lot, because ये बात इवेंट की नहीं है, बात इस कॉज को आगे ले जाने की है, जिसमें टीचर सबसे अहम रोल अदा करें. Thank you so much. That's very nice. You can see this thing, horseback riding. The guy, Mr. Asam, you can see the legend in horseback riding. Thank you so much. You can see, I've got all the youngsters, it's all youngsters. The fact is, they want this event to be a grand success, and the way how they are giving awareness, it's hats off. You can understand, early morning they got to come here, and they got to spread all this sort of humanity. That's very nice of you. They did with me, Dr. Prashant is there. He has taken this initiative, That's very nice of you, and I appreciate you to everyone. You can see where we are. It's a monument, Everyone loves to see, and we are witnessing this. That's a great thing. In fact, you can
see all the audience, you know, they have come for this great affair. You know, the fact is they want to give maximum awareness to the world. That's so nice of you, all these young, generous people. I want to say a big thank you. I want to say a big thank you, and let's spread positivity and create awareness for this Autism Day. Thank you so much. Would you like to say something, Doctor? Thank you. Thanks everyone to come together to celebrate, like to make aware about the autism on the World Autism Awareness Day. So big thanks to everyone to contribute your significant time early morning for such a good cause. Thank you. That's nice, everyone. Good luck.